हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में मेरे साथ है रॉयल एनफील्ड की नई हंटर 350 इन इट्स रेट्रो अवतार। अगर आपको ये बाइक खरीदनी है, प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम ₹1,50,000 एक शोरूम फॉर दिस रेट्रो वेरिएंट। लेकिन अगर आपको मेट्रो वेरिएंट्स खरीदने हैं, इफ़ यू वांट एलॉय व्हील्स ऑन योर मोटरसाइकिल, the maximum that you can spend is 1,69,000 ek showroom. But then of course you have a lot of GMA, genuine motorcycle accessories, which Royal Enfield is offering you for this Hunter 350 so that it suits your taste, it suits your personality and it matches your riding requirements. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मोटरसाइकिल के राइड एंड हैंडलिंग के बारे में। कैसी है ये बाइक चलाने के लिए, उस पर हम फोकस करेंगे। वी हैव अपलोडेड अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे हम बात करते हैं इस बाइक के सभी फीचर्स के बारे में एंड हाउ कॉम्पैक्ट इट इज़, हाउ गुड इट इज़ व्हेन यू स्विंग अ लेग एंड इफ एट ऑल यू शुड बाय इट और नॉट। दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। अभी चलिए सबसे पहले तो इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस बाइक के साथ जो आपको जे सीरीज़ सिंगल सिलेंडर इंजन मिल रही है, यू सी इट ऑन द मीटियोर 350 एंड ऑल्सो ऑन द न्यू क्लासिक 350। लेकिन इस बाइक के लिए, इस फॉर्मेट के लिए रॉयल एनफील्ड ने इस इंजन को थोड़ा अलग से ट्यून किया है। इफ इट मेक्स अ डिफरेंस और नॉट, वी विल सून फाइंड आउट इन दिस वीडियो। लेकिन अदरवाइज इस बाइक का जो हैंडल बार पोजिशनिंग है और जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री है वो अलग है कंपेयर टू एनी ऑफ इट्स engine siblings. You get rear set foot pegs, you get 17-inch wheels at the front and at the back, you have a very accessible seat height. आप देख सकते हो ये मोटरसाइकिल काफ़ी कॉम्पैक्ट है, so it is not going to be intimidating at all. आपको इस बाइक को खरीदते समय ज़्यादा डर नहीं लगेगा। This can pretty much be your first motorcycle because it is that welcoming, it is that inviting. चलिए अब बात करते हैं नंबर्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द आउटपुट नंबर्स ऑफ दिस 350cc इंजन। ये जो 349cc सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC फ्यूल इंजेक्टेड एयर ऑयल कूल्ड इंजन है, दिस जे सीरीज मोटर, इट प्रोड्यूसेस 20.2 bhp ऑफ पावर एट 6,100 RPM and you get 27 Newton meters of torque at 4,000 RPM. रॉयल एनफील्ड का कहना है दैट यू कैन अचीव अ टॉप स्पीड ऑफ 114 kmph, 114 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड ये बाइक अचीव कर पाएगी। यू आर गोइंग टू गेट अ फ्यूल इकोनॉमी ऑफ 36.2 kmpl। इस इंजन के साथ आपको एक 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है। यू डू नॉट गेट अ स्लिप एंड असिस्ट क्लच बाय द वे, and there are no riding modes or traction control available with this Hunter 350. Retro या Metro कोई भी वेरिएंट खरीद लीजिए, there is no electronic features which you can tweak so that your right wrist can play around with this Hunter 350. इस मोटरसाइकिल का वेट वेट है 181 kgs, so it is lighter compared to its engine siblings. सीट हाइट है 800 मिलीमीटर्स की, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस है 150.5 millimeters, and this engine feels unlike the Royal Enfield motors from the past. I say that because this is a very smooth motor. We have said this in the past जब हमने Classic 350 और Meteor 350 चलाई थी, and now with time this motor has started to feel more refined because of course the brand keeps working on it so that you get better NVH characteristics. सबसे पहले तो इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट को सुन लेते हैं। सिंगल सिलेंडर मोटर है, लेकिन एग्जॉस्ट जो है इट इज़ नॉट एन अगली लॉन्ग अनगेनली यूनिट, इट इज़ अ शॉर्ट एग्जॉस्ट एंड कैन। एंड नाउ लिसन टू हाउ दिस हंटर 350 साउंड्स। सो हियर गोज। नाइस एंड डीप, बेसी। और जब आप इस बाइक को चलाते हो तभी आपको आपके फुल फेस हेलमेट में भी ये एग्जॉस्ट नोट काफ़ी आसानी से सुनाई देती है, एंड आई रियली लाइक इट। अगर होंडा के हाइनेस CB 350 को एक अपर एज मिल रहा था ओनली बिकॉज ऑफ द वे द एग्जॉस्ट साउंड्स, दिस इज नाउ गोइंग टू स्टील दैट बाइक्स थंडर। दैट इज व्हाट आई थिंक। लेकिन क्या आपको इस बाइक की एग्जॉस्ट नोट पसंद आती है? ये आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अभी चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसी है ये मोटरसाइकिल चलाने के लिए। हाउ एन्जॉयबल इज इट, हाउ एक्सेसिबल इज इट।
Is it comfortable for your long commutes? And is it going to keep you happy on your occasional weekend rides? So guys, now let's start riding this Royal Enfield Hunter 350. सबसे पहले तो check this out, listen to the exhaust. Now one more time, the mic is inside my full faced helmet. This is how it sounds at idle, और जब आप throttle दे देते हो, this is how it will sound. Quick revision, the numbers are 349cc single cylinder motor, air oil cooled, produces 20.2 bhp of power, 27 newton meters of torque, claimed top speed of 114 kilometers per hour, and fuel economy claim of 36.2 kmpl. इस बाइक का वेट वेट है 181 kilograms, and this Royal Enfield Hunter 350 rides on 17-inch wheels at the front and at the back. ये जो वीडियो है, it is going to be a city and highway ride review. It is going to be a mix. I am going to return this motorcycle. I am on my way to give this bike back to Royal Enfield, and the odometer reading is 212 kilometers. जब मैंने ये बाइक पिकअप की थी, it was a brand new motorcycle. It had just done 10 or 12 kilometers. So ये जो review है, this is based on my 200 kilometers of riding experience, and of course on the way we are adding more kilometers to this ride review experience. So guys, जो variant मैं चला रहा हूँ, this is the Royal Enfield Hunter 350 retro variant in this shade of silver. So इस variant के साथ आपको alloy wheels नहीं मिलते हैं, and you only get single channel ABS because the rear wheel doesn't have a disc brake. But if you want that, you can buy the metro variant of the Hunter 350. It will cost you a little more, but then you have that peace of mind because you get tubeless tires. इस variant के साथ आपको tube type के tires मिलेंगे, and you know, I just don't think that I have the patience to fix a puncture and waste a lot of time in fixing that tube. That is a criminal waste of time in my opinion. तो अगर आपको आपके daily commutes के लिए कोई बाइक खरीदनी है, and if you are considering the Hunter 350, I would recommend that you spend the extra money and you buy the alloy wheel variant so that you are never stranded, and if at all कभी आपकी बाइक पंक्चर हो जाती है, the tubeless tire is going to be that much quicker to fix. अभी चलिए बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में. Once you swing a leg, this Hunter 350 feels very light and very tight, unlike any other Royal Enfield motorcycle जो आपने कभी पहले चलाई होगी. And of course, numbers don't lie. 181 kg of wet weight. ये बाइक काफ़ी हल्की फील होती है, and compared to other roadster motorcycles or other street naked motorcycles which are available in this price range, ये बाइक उनके मुकाबले थोड़ी भारी ज़रूर है, लेकिन फिर भी by Royal Enfield standards it feels very very easy to manage. इस बाइक की जो सीट हाइट है वो भी काफ़ी वेलकमिंग है. So for newbie riders, for first time motorcycle buyers as well, ये बाइक जो है उन्हें डराएगी नहीं, and it is just so easy to manage and so easy to change directions. 17 इंच के पहिए हैं इस बाइक के, so you know it has resulted in a more dynamic riding experience compared to any other Royal Enfield motorcycle which is currently on sale. So this feels very very flickable. इसके बारे में हम आगे चल के इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे. But overall, once you sit on it, once you sit on this Hunter 350, you will really like the way it feels. The problem is ये बाइक थोड़ी कॉम्पैक्ट ज़रूर है, तो जो टॉलर राइडर्स हैं या जो हेवियर राइडर्स हैं उन्हें ये मोटरसाइकिल थोड़ी छोटी लग सकती है. सो दैट इज़ द ओनली ड्रॉबैक दैट आई हैव फाउंड ऑन दिस बाइक. मेरे पास ये मोटरसाइकिल काफ़ी समय से है, 200 से ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए मैं ये बाइक चला चुका हूँ, एंड it is very difficult to find flaws and faults. It is just that good of a product for this particular segment.
अभी रॉयल एनफील्ड प्योर मोटरसाइकिलिंग आपको ऑफ़र करना चाहते हैं तो इस बाइक के साथ आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स नहीं मिलते हैं. यू डू नॉट गेट ट्रैक्शन कंट्रोल, यू डू नॉट गेट राइडिंग मोड्स और एनी ऑफ दोज गिमिक्स. द ओनली electronic safety feature that you get is ABS. On this variant only a single channel ABS. अगर आप इस बाइक का मेट्रो वेरिएंट खरीदते हो उसके साथ आप ट्रिपर नेविगेशन मॉड्यूल भी खरीद सकते हो. आई थिंक यू कैन रेट्रोफिट इट ऑन दिस रेट्रो वेरिएंट एज वेल. एंड ऑल्सो हैव अ लुक, इस बाइक का जो स्पीडोमीटर क्लस्टर है इसके साथ आपको एक एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है. देयर इज़ नो टैकोमीटर एंड यू हैव अ डिजिटल रीड आउट अंडरनीथ जहाँ पे आपको डिजिटल फ्यूल गेज नज़र आएगा. एंड यू हैव 2 ट्रिप मीटर्स ओनली. इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. आई रियली विश दैट रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स नाउ स्टार्ट टू शो रेंज इन्फॉर्मेशन एंड माइलेज इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उनके काफ़ी सारे बायर्स जो हैं लॉन्ग राइड्स के लिए अपने बाइक का इस्तेमाल करते हैं. एंड दैट इज़ वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन विच कैन कम इन वेरी हैंडी टू प्लान योर फ्यूल स्टॉप्स. एज यू कैन नोटिस अभी मैं फंसा हुआ हूँ इन ट्रैफिक. इट इज़ फेस्टिव सीजन एंड राइडिंग दिस बाइक इन एंड अराउंड मुंबई इट इज़ वेरी एफर्टलेस. इस इंजन में इतना अच्छा टॉर्क है दैट चेक दिस आउट, आई एम इन सेकेंड गियर एंड आई डोंट इवन फील द नीड टू शिफ्ट टू द फर्स्ट गियर. I can very easily just slip the clutch and keep picking up pace. Even if I come to a standstill, I can stay in the second gear, just slip the clutch very gently and इस मोटर में से आपको कोई भी hesitation feel नहीं होगा. It is that easy to ride this bike. The engine is very, very tractable. Check this out. I will just come to a halt. I will pull over to the shoulder. So I'm slotting it in second gear now, and check this out. To start from a standstill in second gear, absolutely no problem and there is fantastic torque. तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. अगर आप इस मोटरसाइकिल का सिटी कम्यूट्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, यू कैन वेरी सिंपली कीप शॉर्ट शिफ्टिंग टू अ हायर गियर, स्टे इन दैट हायर गियर एंड जस्ट प्ले विद द थ्रॉटल. द टॉर्क डिलीवरी इज़ वेरी गुड, लोअर डाउन इन द रेव रेंज और मिड रेंज परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है. सो राइडिंग दिस बाइक इन सच अ सिचुएशन इट इज़ नॉट अ स्ट्रगल एट ऑल. ऑल्सो इस मोटरसाइकिल का जो वज़न है 181 kg वेट वेट, इट शाइन्स इन सच अ सिनारियो व्हेन यू राइड दिस बाइक इन सिटी ट्रैफिक, बिकॉज इफ़ यू कंपेयर इट विद द मीटियोर or with the classic 350, the new motorcycles, this feels much more lighter and so much more flickable, and that is also thanks to the 17-inch wheels. So it is very easy to change directions, and this Hunter 350 is the most dynamically sorted Royal Enfield motorcycle ever produced, hands down, no denying that fact. And if you ride all of the Royal Enfield motorcycles back to back, you will notice it and you will appreciate this package. So now I am getting out of the city and we will be riding this bike out on the highway. मैं इस बाइक को हाईवे पे पहले भी चला चुका हूँ, and if you want to know the top speed, you know the claim by Royal Enfield. लेकिन जब आप इस बाइक को भगाना चाहोगे, when you would like to ride it hard and fast, the speedometer needle will climb over 120 kilometers per hour, but for that you will need a long straight, and doing that it is possible, but you will not really feel that the bike is comfortable because it will run out of breath, especially over 110 kilometers per hour. But reaching 100 is not a problem at all, and just have a look how effortlessly I could just change directions on this bike on that 90-degree corner. This is a very, very easy bike to ride, guys. So boys and girls, everyone, they will find this motorcycle to be very, very appealing. Okay, coming back to the top speed point, 100 किलोमीटर पर आवर पे आप इस बाइक को लेके क्रूज़ कर पाओगे एफर्टलेसली अगर आप लॉन्ग राइड्स पे इस बाइक का इस्तेमाल करना चाहते हो. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ स्लो बाइक out on the highway.
But if you want to ride it even harder, even faster, at that time you will notice that this 350cc J series engine, it is not built for a top end rush. It is built for, mid-range performance, low end grunt, and easy commuting, and not really all out fast and furious kind of riding. If you want to know the ideal cruising speed, you can stay anywhere between 60 to 100 kilometers per hour on your daily commutes or maybe on your weekend rides, and you will notice that this engine is very rewarding. आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस की दिक्कत भी फील नहीं होगी. वाइब्रेशंस जो हैं वो काफ़ी कम है इस मोटरसाइकिल पे, एंड until and unless you really rev this motor really hard, आपको वो वाइब्रेशन की तकलीफ फील नहीं होगी. And even when you do that, there is that mild pulsation which you will feel on the foot pegs, and that's about it. ज़्यादा आपको कोई visible vibration या कोई uncomfortable vibration feel नहीं होगा. But then you have to keep in mind what kind of a motorcycle you have purchased and ride it accordingly. You can't ride this Hunter 350 like a street naked sport bike. You have to understand and accept that you have purchased a modern classic and ride it accordingly. Check this out. Right now I am out on the highway. I am in 5th gear and I am riding it at close to 60 kilometers per hour. I am in the last lane, so I am going to drop the speed, and let's check out how tractable this motor is and how low can you let the speed drop in 5th gear, which is the top gear of this motorcycle. So check this out. The speed has dropped under 40, very gently giving this bike a throttle input, and no hesitation, no knocking, no drama. That is how easy this motor is to ride. So शहरों में जब आप इस बाइक को चलाने वाले हो, आपको frequent gear changes करने नहीं होंगे. If your daily office commute is going to include a highway, you can stay in 5th gear, and even if the vehicles on the highway slow down, you don't necessarily have to keep playing around with that gearbox. Now talking about the gearbox, इस बाइक के साथ आपको एक 5-speed unit मिल रहा है, 5-speed gearbox मिल रहा है, no slip and assist clutch. लेकिन जो क्लच है वो इस्तेमाल करने में आपको थोड़ा मीडियम एफर्ट लगाना होगा. It is not the lightest of clutch, but the gearbox is silky smooth. Not even once did I notice a false shift. जब से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, the gear shifts have been seamless and very precise and very confidence inspiring. I never had to fight that gear lever at all. इस बाइक के साथ आपको एक toe only gear shifter मिलता है. You do not get a heel and toe gear shifter, and it is very easy to operate, and no complaints in this department as well. इस बाइक के साथ, by the way, इस रेट्रो वेरिएंट के साथ आपको कोई गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं मिलता है. So it is up to you. You will have to know the gear that you have selected and the gear in which you are riding your motorcycle. But the good thing is that even if you are in a wrong gear, especially if you are in a higher gear, the motor has so much torque that it is forgiving. Of course, if you are in a lower gear and at a higher speed, at that time you will have to make those gear changes. But otherwise, just check this out. It is so effortless. I am in 3rd gear and just wow, this motorcycle is fantastic. I really like how easy of a motorcycle this Hunter 350 is. So if at all you have brought this motorcycle home, and if someone else in your family wants to learn riding a bike, if he or she can manage the 181 kg wet weight, this motor is the most forgiving engine to help a new rider understand how to play around with the throttle, because there is just so much torque that he or she doesn't have to feel intimidated by really playing around with that throttle input. So this Hunter 350 can be a very good family motorcycle if at all you are going to share it
with other family members. अभी चलिए बात करते हैं राइडर्स ट्रायंगल के बारे में. इस बाइक के साथ आपको रियर सेट फुट पेग्स मिलते हैं. दे आर नॉट एज रियर सेट एज you know see it on the Continental GT 650, but you will definitely notice a sporty intent on this Hunter 350. So you sit in a sporty stance, especially your lower body, but then your upper body is nice and upright, and if your arms are shorter in length you will be leaning forward a little. लेकिन जो टॉलर राइडर्स हैं वो इस बाइक पे काफ़ी अपराइट बैठेंगे. ये राइडर्स ट्रायंगल जो है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड यू कैन राइड लॉन्ग आवर्स ऑन दिस बाइक विदाउट गेटिंग टायर्ड फॉर श्योर. इसमें आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. दिस बाइक कैन बी अ वेरी गुड लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग कंपेनियन फॉर यू. द थिंग इज़ दैट द सीट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस. I weigh 80 kgs. I am not really all that lean. लेकिन फिर भी for me there is ample room on the seat, and I am having a good time on this Hunter 350. Even with a pillion, जब मैं इस बाइक को चला रहा था, when we were shooting this bike, I did spend some time on this bike with my photographer seated in the back seat, and both of us had enough room to ride this bike, and we were not really holding on to each other, and we were not really rubbing our bodies onto each other. So भले ही ये मोटरसाइकिल आपको कॉम्पैक्ट नज़र आती है, there is enough space for 2 adults. We were 2 guys roughly 5 feet 8 inches, and no problems in that department as well. So अगर आपके डेली कम्यूट्स में आप इस बाइक का इस्तेमाल करने वाले हो with your friends, with your wife, with your boyfriend, with your girlfriend, whoever it is, in the back seat, on the back seat, there will be decent room for you too. Now we are out on the highway. Check this out. I am riding this Hunter 350 in 5th gear, and I am riding it at 60 kilometers per hour right now. As soon as I open up the gas, just look at the speedometer needle. It very easily picks up pace, and touching 100 is not a problem at all. When I am doing this, आप इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए that the exhaust note is very clearly audible even inside your helmet. So it will keep you connected in your riding experience. I'm going to let the speed drop a little. I'm going to let it drop under 40 kilometers per hour. I will go to the last lane, and check this out. Now that I'm on an incline, even now, check this out. Top gear, very gentle throttle input, no hesitation, no knocking. ये जो Hunter 350 है, it has a very very tractable motor. So ऐसे सिचुएशन में अगर समझिए आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, इवन ऑन अ ब्रिज, तभी भी आपको गियर शिफ्ट्स करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सो व्हेन द इंजन डजंट डिमांड टू मेनी गियर चेंजेस, यू एज अ राइडर आप ज़्यादा देर तक कंफर्टेबल रहोगे, बिकॉज आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. एंड देन एट द एंड ऑफ योर राइड you will not be a tired rider. Now I am going to come to a standstill. I am going to pull over to the service road, and then we will try to accelerate a little hard, and let's check out how quick this motorcycle feels. So let's enter this service road. Let's come to a standstill, and now let's go. Keep looking at the speedometer needle, guys. 20.2 bhp of power, 27 Newton meters, and this is the acceleration that you can expect from this Hunter 350. As you might have noticed, एक बार आप 100 km/h की स्पीड अचीव कर लेते हो, आफ्टर दैट द बाइक
does run out of breath. There is not too much of a fast acceleration available beyond 100 kilometers per hour. तो अगर आप हाईवे पे काफ़ी तेज़ इस बाइक को चला रहे हो, if you are riding this bike over 100 kilometers per hour already, you know your overtaking capabilities are going to be limited because of this motorcycle's engine capabilities. तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए. One more time, let me come to a standstill and let us check out the acceleration, and this time I will keep quiet so that you can also listen to the exhaust note of this Hunter 350, you know, the way it picks up pace. So now at a standstill and let's go. So there you have it. That is the acceleration on offer with this Hunter 350. Not really a fast motorcycle, but fast by Royal Enfield standards for sure. If you are comparing it with the other 350cc siblings with the new J series motor, and it is just so easy to ride. Let us also check out the acceleration in the initial gears. So let's rev it in the first and second gear at least, because that is what matters inside city. In third gear, well over 80 kilometers per hour. So that should be good enough for your, you know, sudden urges of need for speed. चलिए अभी बात करते हैं राइड एंड हैंडलिंग के बारे में. नई शैसी है इस बाइक के लिए, बिकॉज यू नो द फॉर्मेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. 17 इंच के व्हील्स आपको इस बाइक के साथ मिलते हैं. यू कैन बाय दी मेट्रो और रेट्रो, एनी वेरिएंट. मेट्रो वेरिएंट के साथ आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. रेट्रो वेरिएंट के साथ आपको ये 17 इंच के ट्यूब टाइप रिम्स मिलते हैं. यू गेट स्पोक्ड रिम्स. ऑलराइट. So when you ride this bike, it is very confidence inspiring. The rubber compound on offer with this Hunter 350 retro variant, they have offered me very good grip, and मैं इस बाइक को काफ़ी तेज़ बारिश में भी चला चुका हूँ. तभी भी मुझे इस बाइक को चलाते समय कभी भी ग्रिप की कमी महसूस नहीं हुई. These tires did a very good job even in Mumbai monsoon. So no complaints with the tires at all. It is just that tube type tires are not my thing anymore, because I don't have the time, if at all the bike gets punctured, to, you know, sit and fix it for a long time. अभी आप देख लीजिए, I'm in first gear. It is so easy to manage. I did not even have to, you know, put my feet on the ground. It is just that easy to manage. जब आप इस बाइक को चलाने वाले हो inside the city, if you are stuck in traffic, it will be very easy to have both your feet flat on the ground. Seat height ज़्यादा नहीं है, so even a 5 feet 5 inch rider will find it easy to ride this Hunter 350. ज़्यादा intimidating ये बाइक नहीं है. When you want to slice through traffic, let's check it out. It is very easy. Check this out. You can very easily switch lanes and change direction, and this Hunter 350 will follow the line that you want it to with confidence and with ease. You do not have to fight the weight. Classic 350 और Meteor 350 को अगर आप इस बाइक के साथ कंपेयर करोगे, both of those formats are not really suited for dynamic riding. This, however, अगर आप इस बाइक को घाट रोड्स पे चला लोगे, this will be much faster to go up and down the hill, and you will also have a lot more fun on this bike, because it will give you that much more confidence when you are riding it. And
I have been very happy with this Hunter 350 throughout my riding experience. जब आप इस बाइक को मैनेज करते हो इनसाइड योर पार्किंग स्पॉट, तभी आपको इस बाइक का 181 kg का वेट वेट ज़रूर महसूस होगा, because 181 kg is not light by any means. But once you are on the move, it will not create any problems at all. Check this out. Very easy to switch lanes, and this Hunter 350, I love it. Suspension setup जो है इस बाइक का, by the way, that is on the stiffer side. I have been riding it for long, and let me tell you that the suspension tune will reward you जब आप इस बाइक को तेज़ चलाते हो, जब आप इस बाइक को घाट रोड्स पे चलाते हो. But it will be rewarding only till the time the road is very good. अगर आप ख़राब रास्तों पे से इस बाइक को चलाने वाले हो, तभी आपको खड्डे जो हैं ज़रूर महसूस होंगे. And the front suspension does give out a sound if you attack a particular pothole, if you approach it hard and fast. So you have to ride it slow if you notice broken terrain, so that you are comfortable on the saddle. पिलियन को भी झटके फील होंगे अगर आप ज़्यादा तेज़ इस बाइक को चला लोगे खड्डों के ऊपर से. लेकिन as long as the roads are good, if you are riding this bike out on the highway, you will have no complaints, and at that time the ride quality will feel spot on, and you will not be left wanting for more in terms of comfort. Because सबसे पहले तो सीट जो है इस मोटरसाइकिल की वो काफ़ी सॉफ्ट है. दिस इज़ अ स्टॉक सेटअप दैट आई एम राइडिंग. You also have other accessories which you can buy for more comfort and personalize your Hunter 350, so it is up to you. But as a stock bike, this feels decent. It is just that खड्डों पे से you will notice each and every undulation. There is no denying that fact. Single channel ABS on this bike, ABS only on the front wheel, and never did the ABS intervene. I had a very confidence inspiring ride, and the brakes did support my riding style very well. But that is only about the front brake. Talking about the rear brakes on this bike, on this Hunter 350 retro variant, आपको एक ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है. The braking bite is good, the stopping power is nice, but it does lock up if you are aggressive on the rear brake. अगर ये आपकी पहली बाइक होने वाली है, and if you are not very confident using the front brake, अगर आप rear brake ज़्यादा यूज़ करते हो, आप इस बाइक का rear end जो है वो काफ़ी बार लॉकअप करोगे till the time you get acquainted to the motorcycle. So be careful and ride it accordingly. And I would recommend that you should buy the dual channel ABS Metro variant of this Hunter 350, because you just get that extra bit of safety. Overall braking performance के डिपार्टमेंट में कोई भी complaints नहीं है मुझे. You can check this out. I can very easily and confidently slow down this motorcycle the way I want it. I can aggressively approach other vehicles and slow down this bike if at all there is a need to. So उस मामले में भी मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं हैं. लेकिन जब आप सिटी कम्यूट्स के लिए किसी बाइक का इस्तेमाल करने वाले हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इज़ टॉर्क, एंड दैट इज़ इन अबंडेंस ऑन दिस Hunter 350. Low end performance is brilliant. It is very, very good. Let me just pull over to the shoulder, and let us this time start in third gear, and let us check if this motor has enough grunt to start from a standstill in third. Now lugging the engine from a standstill in third gear is not something that I recommend, but just to highlight the torque availability on this motorcycle, I want to try it. Now I don't know if it will do it or not, but let's try it out. Why not? Check this out. Now in neutral, all right, upshifting.
second gear and now in third gear. All right, from a standstill, check this out. Hunter 350, third gear from 0 kilometers per hour, effortless, no knocking, no hesitation. इतना बढ़िया टॉर्क आपको शायद ही इस सेगमेंट के किसी मोटरसाइकिल में मिलने वाला है. I think the Honda Highness CB350 is also quite a good motorcycle, but this feels brilliant. This feels so smooth. Check this out one more time. Neutral, upshifting to second, and now in third gear. So check this out. Slipping the clutch, picking up pace, no knocking, no hesitation, and this Hunter 350 is at speed to keep up with other road users. So guys, you know, that is the best demonstration that I can give you about the torque availability on this bike. ये मोटर जो है काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइंड है, and for a Royal Enfield this is genuinely a new benchmark of refinement. So guys, check this out. अगर आपको रोड पे अंडुलेशंस दिखते हैं, आप काफ़ी आसानी से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, एंड इट फील्स श्योर फुटेड, इट फील्स कॉन्फिडेंट. ज़्यादा ट्विची ये बाइक नहीं है. इस बाइक के वज़न को आपको फाइट नहीं करना पड़ता है. इट जस्ट फील्स लाइक अ परफेक्ट एंट्री लेवल रॉयल एनफील्ड. आई विल रिपीट दैट. इट फील्स लाइक अ परफेक्ट एंट्री लेवल रॉयल एनफील्ड. तो अगर आपको पहली बार कोई रॉयल एनफील्ड खरीदनी है, if this is in your consideration list, let me tell you, you will not regret it. So guys, that has been it. That has been my city and highway ride experience with this 2022 Royal Enfield Hunter 350. आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या लगता है आपको इस बाइक के बारे में. क्या आप इस बाइक को ख़रीदना पसंद करोगे? I am sorry about the unnecessary honking on the streets, but horn is quite a safety feature too here on the Indian streets. Alright, coming back to our point. अगर आपके और कोई सवाल हैं इस बाइक के बारे में, do ask me in the comments below. I will try my best to help you out and answer your questions so that you can make an informed motorcycle buying decision. But always remember, अगर आप कोई टू व्हीलर खरीद रहे हो, डोंट गो बाय एनी रिव्यू दैट यू वॉच और रीड. गो एंड राइड द बाइक. दैट इज़ व्हेन यू विल नो इफ दैट बाइक इज़ फॉर यू और नॉट विद इन मिनट्स. सो सी यू सून. सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गियर्स चैनल इफ़ यू हैवंट टिल नाउ. बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें, यू गेट अ नोटिफिकेशन and you are updated with the latest of news and reviews from the Indian automobile scene. By the way, before I end this video, very quickly let me also tell you, आपको इस बाइक के साथ एक USB charging point भी मिलता है, so you can have your smartphone charged on the go or your GPS module charged on the go. Goodbye guys, always ride safe, always wear your helmet, always wear proper riding gear and stay safe, follow speed limits and enjoy your ride.